दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत ने हाल ही में यूक्रेन युद्ध पर यूएन सभा में क्या संदेश दिया? इसमें शामिल था, फील्ड में समाधान नहीं, बातचीत जरूरी। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने यूएन महासभा में स्पष्ट शब्दों में कहा, इस संघर्ष का समाधान युद्ध भूमि पर नहीं हो सकता, वार्ता ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने संवेदनशील रूप से इस युद्ध के फैलते मानवीय नुकसान और उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ती कठोर छाप को भी रेखांकित किया। पर्वतनेनी हरीश ने कोलेटरल कॉन्सिक्वेंसेस यानी इस संघर्ष के परोक्ष प्रभावों पर भी चिंता जताई, खासकर ईंधन की बढ़ती कीमतें, जिसने दुनिया भर के खासकर ग्लोबल साउथ के देशों को आर्थिक रूप से झकझोर दिया है। भारत ने किसी शांतिपूर्ण हल की ओर उठे कदमों का भी स्वागत किया, जैसे अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक और उसके बाद ट्रंप का यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं से अमेरिका में संवाद। हरीश ने माना कि ऐसी पहले शांति की संभावना बढ़ाती हैं। यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी कई वैश्विक नेताओं, पुतिन, जेलेंस्की, यूरोपियन परिषद प्रमुखों के संपर्क में है। मोदी की ये पॉलिसी दर्शाती है कि यह युग युद्ध का नहीं, शांति का है और भारत हर स्तर पर शांति प्रक्रिया का समर्थन देता है। भारत का दृष्टिकोण लोगों के ऊपर केंद्रित रहा है, जहां तक संभव यूक्रेन को मानवतावादी सहायता और ग्लोबल साउथ के मित्र देशों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना शामिल है। Mr. President, India continues to remain concerned over the situation in Ukraine. We maintain that the loss of innocent lives is unacceptable and no solution can be found on the battlefield. India has consistently advocated that the path of dialogue and diplomacy is the only way forward to end the ongoing conflict in Ukraine, no matter how insurmountable such a course may appear. The wholehearted participation and commitment of all stakeholders are critical for lasting peace. Mr. President, India welcomes recent positive developments in this direction. We endorse the summit meeting in Alaska between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin. We appreciate the progress made at the Alaska summit. We also note the subsequent diplomatic efforts by the US President in engaging with Ukrainian President and European leaders in Washington, D.C. Prime Minister Narendra Modi remains in touch with President Putin, President Zelensky, and European leadership on the evolving situation. We believe all these diplomatic efforts hold the promise of bringing to an end the ongoing conflict in Ukraine and opening up prospects for a lasting peace. Mr. President, we continue to note with regret the collateral consequences of the conflict, including prices of fuel, affecting the world at large, and particularly the countries of the global south, which have been left to fend for themselves. From our perspective, it is critical that their voices are heard and their legitimate concerns duly addressed. India's approach to the Ukraine conflict continues to be people-centric, providing humanitarian assistance to Ukraine and economic support to our friends and partners in the global south, including some of our neighbors who are facing economic distress. To conclude, Mr. President, an early end to the conflict in Ukraine is in the interest of everyone. As Prime Minister Narendra Modi has said on several occasions, this is not an era of war. India stands ready to support diplomatic efforts for an early end to the conflict. I thank you, Mr. President.